ज्ञानम ओडिशा को मु सत्यजीत महांती आपन को स्वागत करुच्ची। आजिर वीडियो रे आमे ओस्टेट सिलेबस को बेस करी मैथमेटिक्स रो सेट थ्योरी ऊपर डिस्कशन करिबा। In our day to day life we use different terms like a bunch of key, a group of children, a set of books and other. A bunch of key tells about there is a collection of some number of keys. Similarly, a group of children represent a number of children and a set of books represents the collection of a definite number of book. Similarly, we use the word week, that is the collection of 7 days, and the word year represents the collection of 12 months. All these words give some idea about set. In mathematics, the concept of set theory was first proposed by George Cantor. He was a German mathematician. Informally, a set is regarded as a definite collection of well-defined objects. अर्थात गोटे सेट होची किसी well-defined objects collection, and all these objects are called the element of the set. अर्थात गोटे सेट होची a definite collection of well-defined object, and all these objects are called the element of that set. A set is generally noted by the capital English alphabets that like A, B, C, D and others. If A is an element of a set A, we say that A belongs to A and we write A belongs to A. This sign refers to the belongs to sign. अर्थात जदि गोटे सेट रे गोटे एलिमेंट जाउची, in that case we say that here A belongs to A. और जदि गोटे एलिमेंट टा उक्त सेट रे जाउनी, we write A B does not belongs to A. Now we will discuss about different types of set. First, the null set or the empty set. A set which contains no elements is called a null set. Null set is that set which does not contain any element. अर्थात जो सेट रे कोनोसी मध्य एलिमेंट न थाए ताकू आमे कहता null set बा empty set. A null set is generally denoted by phi or a blank within the blank curly brackets. Now we discuss about singleton set. The set which contain a single element is called a singleton set. जो सेट रे केवल गोटी ही एलिमेंट रही थाए उक्त सेट को आमे कहता singleton set. Now comes to finite set. A finite set कौन? A finite set is the set that has finite number of elements. That is, जदि गोटे सेट रे finite number of elements रही थाए ताकू आमे कहता finite set. बा जो सेट रो एलिमेंट्स गुडी को आमे काउंट करि परिबा ताकू आमे कहता finite set. For example, here the set contains 5 number of elements, that is 2, 3, 6, 8 and 5. Here the number of elements is 5, and so this is an example of a finite set. The number of elements in a finite set is always a natural number. गोटे finite set रे जत्ते की number of elements रहे that is always a natural number ही हबो. आउ सही नंबर को आमे कहता कार्डिनालिटी ऑफ दैट सेट. गोटे सेट रे जति के एलिमेंट रही थांती ताकू आमे कहता उक्त सेट रो कार्डिनालिटी. So cardinality represents the number of element in a set that is present in that set, and it is often denoted by mod A or n of A. Infinite set. The set which is not finite is called an infinite set. जो सेट फाइनाइट नुह ताकू आमे कहता infinite set. The cardinality of an infinite set is represented by n of A, which is equal to infinity. As there is unlimited number of elements in this set, so we cannot calculate the or count the number of elements, so it is represented by infinity. Let's see some example of infinite set. The set of whole number is an example of infinite sets. Similarly, गोटे लाइन ऊपर केतरा पॉइंट अच्छी, we know that there are infinite number of point in a line, we cannot count it, so it is also the set of all points on a line is also an infinite set. The set of all triangles is also a infinite set. Subset. Let us consider two sets A and B. If every element of the set A is also an element of set B, अर्थात
ए रे थिबा प्रत्येक एलिमेंट जदि बी रो गोटे गोटे एलिमेंट हुअंती इन दैट केस वी से दैट ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी अर्थात जदि ए रो प्रत्येक एलिमेंट जदि सेट बी रे मध्य अंतर्भुक्त होइतांती ताले आमे कहबा सेट ए टा सेट बी रो गोटे सबसेट. This symbol is represents the subset symbol. Now some discuss about the properties about subset. Every set is a subset of itself. प्रत्येक set निज निजर गोटे subset होइथांती and empty set is a subset of every set. गोटे set निजे निजर subset एवं empty set प्रत्येक set रो गोटे subset. A subset B refers to A is a subset of B, that is A is contained in B अर्थात A टा B मध्य contain होइकी अछि. Similarly B subset A refers to B contained in A. If the set A contains the element 2, 4 and 6 and the set B contains the element 6, 4, 8 and 2, then we say that A is a subset of B. कहीं देख ए रे किए किए जाउची 2 4 और 6 और सेट बी रे किए जाउची 6 4 8 और 2 अर्थात ए रो प्रत्येक एलिमेंट बी मध्य रे अछि अर्थात द सेट ए इज कंटेन इन बी सो वी से दैट द सेट ए इज सबसेट ऑफ बी बट वी कैन नॉट से दैट बी इज ए सबसेट ऑफ ए बिकॉज बी इज नॉट कंटेन इन ए बट ए इज कंटेन इन बी. अगेन जो क्षेत्र रे A इज ए सबसेट ऑफ B हबो एवं B मध्य सबसेट ऑफ A हबो इन दैट केस वी से दैट A इक्वल टू B अर्थात टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल सेट दैट इज टू सेट्स आर इक्वल सेट इफ बोथ आर सबसेट ऑफ ईच अदर. We also previously studied that every set is a subset of itself and null set or phi set is always a subset of every set. If A is a subset of B अर्थात जदि A गोटे subset of हुए कार B रो in that case we say that B is a superset of A and we write B is superset of A. For example, the set A contains the vowel A, E, I, O, U and the set B contains the all English alphabet. Here A is a subset of B because the vowels are contained under the alphabets. So A is a subset of B. So we can write that B is a superset of A. If a set contains n number of elements, then the number of subset is 2 to the power n. अर्थात जदि गोटे सेट रे n number of element रही थांती ताल तार केतरा सबसेट रहबो 2 to the power n number of subset रहबो एवं जदि गोटे सेट रे n number of elements रहती ताले तार प्रॉपर सबसेट कथा केतेटा हबो 2 to the power n minus 1 अर्थात जदि गोटे सेट रे n नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहंती तार 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट रहइबो एवं 2 to the power n minus 1 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट रहइबो. ए सेट इज नेवर ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ. गोटे सेट निजे निजर केबे प्रॉपर सबसेट हेई पारि न थाए एवं एम्प्टी सेट इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट. एम्प्टी सेट प्रत्येक सेट रो गोटे proper subset. We will discuss about power set. The concept of power set is an very important concept as per the Osstet syllabus. हेले power set कौन कहूँ? The power set is the collection of all subset of set A. That is गोटे सेट रो जेतेटी सबसेट रहंती से समस्त को कलेक्ट करके जो सेट आमर गठित होता है ताको आम कौन कहता हूँ उक्त सेट रो पावर सेट. द पावर सेट इज डिनोटेड बाय P of A. फॉर एग्जांपल जदि गोटे सेट हुए A P Q सेट एटा क्या क्या नहीं गठित P और Q को ताले सेट ए रो सबसेट गुड़िक किए किए हे फाइ गोटे सबसेट P गोटे सबसेट Q गोटे सबसेट एंड PQ गोटे सबसेट. तो ये जो चारिटा सबसेट हमको मिलला ताकू नहीं जो सेटटा हमर गठित होला चारिटा सबसेट को नहीं जो सेटटा गठित होला बा P ऑफ ए जोटा हैला ताकू हमें कहता पावर सेट ऑफ A. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए पावर सेट.
गोटे सेट्र गोटे पावर सेट्र केतेटा एलिमेंट रही था फर्मूला हूँ आमर 2 to the power m where m is the number of element in the set अर्थात जदि गोटे सेट्रे m नंबर ऑफ एलिमेंट रही था तार पावर सेट्रे 2 to the power m नंबर ऑफ एलिमेंट रहिबे. For example, here the set A contains two elements P and Q. So number of elements in the power subset is 2 to the power 2, that is 4. So there are 4 number of elements in the set P of A. Now we will stop our discussion. In the next section we will discuss about different operation on set. Thank you for joining the class.